रास पंचाध्याय, रास लीला के 5 अध्याय जो श्रीमद् भागवत महापुराण का दिल है, हृदय है। उसके संस्कृत का मूल पाठ आप बड़े ध्यान से सुनिए। इस तरह का पाठ आपको अन्यत्र और नहीं मिल सकता। किसी भी तरह के पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। रास यानी महारहस्य, जिस रहस्य को बड़े बड़े ऋषि मुनि अभी तक पूरा नहीं समझ पाए। अनेकों विद्वानों ने अपने अनेक अनेक भाव प्रकट किए हैं। उसको समझने से ज़्यादा अच्छा यह है कि इन दिव्य श्लोकों का स्मरण करें, इनको सुने, इनका पठन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। भगवान अपने इष्ट देवता नृसिंह भगवान को स्मरण करते हैं, उस कुटिया को स्मरण करते हुए और अपने ताऊ ठुलबा जी को स्मरण करते हुए, अपने पितरों का ध्यान मन में रखते हुए रासलीला का आरंभ। श्री सुकोवाच भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराज ककुभकरैर्मुखं प्राच्याबिलिम्पन्नरुणेन सन्तमय सचर्षणीनां मुदगाचुचो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदिशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिययो काचिद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावं मनुदास्य पराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य शिशून्पयः शुश्रूषन्त्य पतीन् काचिदश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्य प्रमिजन्त्योऽन्याञ्जन्त्य काचिलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काचित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः क्वचिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापैतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगताः काचित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलितलोचनाः दुस्सहा प्रेष्ठविरहा ते वृत्तापधुता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषा निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीणवन्दनाः। राजोवाच कृष्णं विदो परं कान्तं न तो ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुकोवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्या सिद्धिं यथा गतः दिशन्नपि हि श्रीकेशं किमुदादोक्षजप्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं मरो विदधतो यान्ति तन्मायतं तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते तादिष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचा पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच
स्वागतं वो मा भागाः प्रियं किङ्करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद्भूतागमनकारणम् रण्ये सा घोररूपा घोरसत्ता निशीविता प्रतियाता व्रजं निहास्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरा पितरं पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वः विचन्वन्ति पश्यन्तु मा किड्डं बन्धुसाध्वसम् दिष्टं वनं कुसुमितं राकेश कररञ्जितं यमुना निरलीले जत्तरुवल्लभशोभितं तद्यातमां चिरं गोष्ठं सुशब्दं पतिं सतीः कृणन्ति वत्सावाला च तान् पायत दुह्यत अथवा मदविस्नेहा भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वा प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तु सुशोषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्या प्रजानां च अनुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो विद्धो जडोर्योगदिनोऽपि वा पतिश्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सो विरपातके अस्वर्गं मया सस्यं च फल्गो कच्चं भयावहं जुगोषितं च सर्वत्र उपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणादर्शना ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो गृहन् श्रीशुकोवाच इति विप्रियमा कन्या गोप्यो गोविन्दभाषितं विसृणावग्न संकल्पा चिन्ता मा प्रदुरत्ययाम् कित्वा मुखान्यवसु च स्वसनेन सुस्य बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि चतुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरा स्मतूष्णीं प्रेष्टं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् सन्नम्ब गदगदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्यौचुः मैवं विभोरति भवान् गदितुं निसंसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजसु दुरवग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यत्पत्यपत्य स्वेदात्मनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तम् अस्त्वैवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे पृष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला स्व आत्मन्नित्या प्रिये पतिसुधादिविरार्तिदः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमा स्म छिन्द्या आसामितां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता पयितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृते पादौ पदं च चलतः तव पादमूलायाम कथं व्रजमतो करवामि किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतसहिच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहाध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते यद्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया तथा क्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राग्म तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्गस्थातुं त्वया विरमिता भरपारयाम श्रीजत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलश्च लब्ध्वापि वक्षस पदं किल भृत्यजुष्टं यस्या स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना तन्ना प्रसीद विजनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्रप्ता विशिज्य वसति तदुपासनाशा त्वत्सुन्दर स्मृतिनिरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदेहि दास्यं वीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डल श्रीगण्डस्थलाधर स्वतं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षाश्रिये करमणं च भवाम दास्य काचङ्गते कलपदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चलेति लोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोदिजद्रुममृगा पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तिबन्धो तप्तास्तनेषु शिशिरस्य च किङ्करीणां श्रीशुकोवाच इति विक्लवैतं तासां सुत्ता योगेश्वरेश्वरः प्रहस्या संयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत ताभिः समेताभिरुदार चेष्टिता प्रियेक्षणो फुल्लमुखी विरच्युतः उदारः सद्विजगुन्ददिधिति व्यरोचतैणाङ्कयोडुभिर्वृतः उपगीयमान उदगायन् वन्ता सदयूतपः मालां बिभ्रदवैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनम् नद्यापुलिनम् आविश्य गोपी विरहबालुकं रेमे तत्तरलानन्दा कुमदामोदवायुना बाहुप्रसार परिरम्भकरालकुरु निवीतनाभन बाहुप्रसार परिरम्भकरालकुरु
निवीचना लभन नर्मनकाग्रपाते क्षैल्यावलोकहस्ते ब्रजसुन्दरीणामुत्तं वयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं विनिरीश्रेणामानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यं मानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरदीयत। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोत्सवः। श्रीकृष्ण प्रसन्नार्थं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ त्रिंशोत्सवः। श्रीशुकोवाच अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तप्तमचक्षाणा करिण्य इव ऊतपम् अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम् गत्यानुरागस्मृतविभ्रमीक्षितैर्मनोर्मालापविहार विभ्रमे आक्षिप्तचित्ता प्रमदारमापतेस्तास्ताभिचेष्टा जगृतदात्मिकाः गते स्मिता प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तया आशा असावहं न्वेत्य बला तदात्मिका नवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमाः गायन्त्यवुच्चैरमुमेव संहता विचिकुरुन्मत्तकवद्वनाद्वनं पप्रच्युराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिन् दिष्टो वा कच्चिदस्वाताप्लक्ष्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चिदुकरवकाशोका नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मितः कच्चितुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये शात्वालीकुलैर्बिभ्रादिष्टत्येति प्रियोच्युतः मालत्यादर्शी व कच्चिन्मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं मोजनयन् याता करस्पर्शेन माधवः चूतप्रियालपरशासनको विदारा जंवर्कबिल्लबकुलाम्रकदम्बनीपा येने परार्थभवका यमुनोपकूला संसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्ना किं ते कितं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रि स्पत्सो सबोत्वलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भवुरु क्रमभिक्कमाद्वाहो वराहो पुषा परिरम्भणेन अप्येण पत्न्युपगता प्रेयगाते स्तन्वन्दिसां सखिषु निर्वृतिमच्युतो वा कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कमरञ्जिताया कुन्दस्रजकुलपतेर्यवाति गन्ध बाहुं प्रियांशोपधाय गृहीतपदमो रामानुज तुलसीकालकुलैर्मदान्धै अन्वीयमानिह वर्तरवा प्रणामं किं वा विनन्दति शरण प्रणयावलोकै विच्चत्ते मालता बाहो नप्यास्तिष्ठा वनस्पतेः नूनं तत्करजा स्पृष्टा बिभ्रत्योत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्ता वचो गोप्या कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ताहिनो चक्रो तदात्मिकाः कस्याचित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्या विवस्तनं तोकायित्वा रुदत्यन्यापदाहं झटकायतीं दैत्यायित्वा जहाराण्यामेका कृष्णार्भभावनां लिङ्गयामासा काप्यङ्घ्रे कर्षन्ति घोषनिस्वनैः कृष्णरामायते द्वैतो गोपयन्त्यश्च काचन वत्सायति मन्ति चान्या तत्र कातुबकायतीम् आहूय दुर्गा यद्वा कृष्णातमनुकुर्वतीं वेणुं कडन्तीं क्रीडन्तीं मन्या संसति साध्विति कस्याचित् स्वपदं यश्च चलन्त्याः परा ननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः मां भैष्टवात वर्षाभ्यां तत्ताणं वेतं मया इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतन्त्युन्नितिदेम्बरम् आरुह्येकापदा क्रम्या श्रस्याः परां नृप दुष्टाय गच्छ जातोऽहं कलानां नन्ददण्डधृक् तत्रैकोवाच हि गोपा तावाग्निं पश्तोल्वणं चक्षुष्यासु विदद्धमो विदाशे क्षेम मञ्जसा वधान्यया सजा काचे तन्ने तत्रौलोकले भीतासु दिक्पिता यासां बीजे भीतिविनम्मनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना बिन्दावनलतास्तरोन् व्यचक्षता मनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनुर्महात्मनः रक्षन्ते हि ध्वजाम्भोजा वज्राङ्कुशायवादिवि तैस्ते पदे तत्पदवीं मन्निच्छन्तो कृतो बलाः बद्ध्वा पदैः सुपिक्तानि विलोक्यार्थः समब्रुवन् कस्यापदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना संन्यस्तप्रकोष्ठायाः करिणो करणायथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविन्दा प्रीतो यामनयद्रा धन्याहोऽमि आल्यो गोविन्दाङ्घ्रिभिजरीणवः यान् परमेश्वरमा देवी दधुर्मोज्ञाघरोत्तये अतश्यामोनि न क्षोभं कुर्वन्त्युच्चै पदानि यत एकापैत्या गोपीनां रहो भुङ्क्ते च त्वाधनं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्रा तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः किद्यस्वजाताङ्घ्रितलान् मुनिन्ये प्रियसीं प्रियः इमान्यधिकमगनानि पदानि
वहतो वधूं गोप्या पश्यति कृष्णश्च वाराक्रान्तशिखामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतुर्महात्मनः अत्र प्रसूनावचया प्रियार्थे प्रीसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं तत्र कामिन्याः कामिना कृतं तानि चूडितां कान्तां विष्टाम्य ध्रुवं रेमेतया चात्मनता आत्मारामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां च दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताच्चैरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपी मनयत्कृष्णो विहायान्यास्तिरो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना मामसोऽभिते प्रियः ततो गत्वा वनो देशं दीप्ता कैसमब्रवे न पार्येऽहं चलितुं नयं मां यत्र ते मनः एवमुक्ता प्रिया महास्कन्धा आरुह्यतामिति ततश्चान्तरते कृष्णा सावधूरन्वतप्यत हा नाथा रमणा प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाय मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददिशो प्रियविश्लेषं मोहितां दुःखितां सखीं तया कथितं मा कन्यामानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्मा विस्मयं परमं ययोः ततो विसन्वनं चन्द्रा ज्योत्स्ना विभाव्यते तमापृष्टं आलक्ष्य ततो निवभृतु स्त्रियः तन्मनस्का तदा लापा तद्विचेच्छा तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्तु नात्मरागाणि संस्मरो पुनःपुलिनमागत्य कालिञ्जाः कृष्णभावना समुहिता जगो कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिताः। ओम जय जय श्री ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषण नाम त्रिंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपिका गीत आया है, ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए और तन्मय होकर के भगवान के साथ एक हो जाइए। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदात्रिः दयिते दिश्यतां दिक्षु तावका त्वयिदिता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये जात साधु जात सत शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका भरद निघ्नतो नेह किं बदा विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलाद् वृषमयात्मजाद् विश्वतो भयाद् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल दीनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सकौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णधुर्यते चरणमीयुषां संसितेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसिन स्मिता भज सखे भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शनं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना किन्दिच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति हृदरसीधुना प्यायय सुना तव कथामृतं तप्त
तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातदं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतेनाङ्कुरै सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति। दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं देयमापदि। चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधियन्। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि। चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधियन्। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं इतरराघवे स्मारणं नृणां वितरवीरनस्तिधरामृतम्। अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यतां। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गता। गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं। बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मन। ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम्। त्यज्मनाक च नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निसूदनम्। ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम्। त्यजमनाक च न त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निसूदनम्। यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटसित व्यदते स्नकिंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना। कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय
अथ द्वात्रिंशोत्सव। भगवान प्रकट हो गए इस गीत को सुनने के बाद। जब गोपियों ने गीत गाया तो फिर प्रकट हो गए। श्री शुकोवाच इति गोप्या प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य च चित्रदा रुर्दुषु स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्योत्फुल्लदिशो बलाः उत्तस्तुर्युगपत् सर्वा तन्न प्राणमिवागतम् काचित् कराम्बुजं सौरे जगृहेऽञ्जलिनां मुदा काचिद्दधार तद्वाहुं मनसे चन्दनरूषितम् काचिदञ्जलिनागेणा तन्ने ताम्बूलचर्वितम् एका ददङ्घ्रिकमलं स्तन्तप्ता स्तनयोरदात् एका भ्रुकुटे मा बद्या प्रेम सन्नं विह्वला रतिवैक्षतकटाक्षे पैषन्दष्टदशनच्छदा अपरानि विसद्दिग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि न तिप्य सन्तस्तच्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्याते योगीवानन्दसंप्लुता सर्वास्ताः केशवा लोका परमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्येता जनाः ताभिर्विदूत शोकाभिर्भगवान् चितोवृता विरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यता तासमादाय कालिन्दा निर्विश्य पुलिनं विभु विकसत्कुन्दमन्दारा सुरभ्य निलसटपदम् शरच्चन्द्रांशु सन्दोहा दत्तदोषा तमः शिवं कृष्णाया हस्ततरराचितकोमलवालुकं तद्दर्शनालाद विदूतहृद्रजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्किते रचिकृपन्नाशनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दत सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासिलीलेक्षणं विभ्रम ब्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्यै सत्कुपिशा बभासिरी गोप्यौचुः भजतो नो भजन्ते का एतद्विपर्ययं नो भया च भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधुः श्रीभगवानुवाच मितो भजन्ते ये सख्या स्वार्थे कान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्दिनान्यथा भजन्त्या भजतो ये वै करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतेऽपि न वै केचि भजन्त्यभयतः कुतः आत्मा रामाह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रोहा नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजामि मीसामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभितो न वेद एवं मदर्थो जितलोकवेदस्त्वानामिवो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सोहितुं मार्हत्तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं मृदनिर्वद्य संयोजां स्वसाधुकृत्यं बुधायुषापि वा या मा भजन् दुर्जरगेहशृङ्खला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां रागोपीशान्तनं नाम द्वात्रिंशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रयस्त्रिंशोत्सवः। श्रीशुकोवाच इत्थं भगवतो गोप्या सुत्ता वाचा सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः श्रीरत्नैरन्वितपीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठेषु निकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नवस्था वा विमानः शतसङ्कुलं दिवौकसांशधाराणां वोत्सुक्यापहितात्मनां ततो दुन्दुभयोने दुर्निपेतो वसुविष्टयः जगुर्गन्धर्वपतया शस्ते काश्चिदसोमलं बलयानां नो पुराणां किङ्कणीनां च योषितां सप्रियाणाम् अभूच्छब्द तुमुलो राजमण्डले तत्रातिशुशुभेताविर्भगवान्
भगवान् देवकी सुतः मध्ये मणिनामे मानामामर्गतो यथा पादन्यासैर्भुजविदुतिभिः सस्मितैर्भुविलासैर् भज्यन्मध्ये चलकुचपटे कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्या कवररचना ग्रन्थया कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तटदेवता मेघचक्रे विरेजो उच्चैर्जगुर्नित्यमाना रक्तकण्ठोरतिप्रियाः कृष्णाभिमरसमुदिता यद्गीतेनेदमावृतं काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिर्मिश्रिताः उन्निन्ये पुयिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेवाध्रुवमुन्निन्ये तस्य मानं च भवदात् काचिरासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थश्च गदाभृता जग्राह भावना स्कन्दं सलता ज्वलय मल्लिका तत्रैकां संगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तम् आग्राय हिष्टरोमा चुचुम्ब कस्याचिन्नाट्य विक्षिप्ता कुण्डला तिजमण्डितं गण्डगण्डे सन्धदत्यादात्तामूलचरवितं नित्यन्ति गायते काची कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्तादास्तनयो शिवं गोप्यो लब्धाच्युतं कान्तं श्रिया एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ तद्दूर्व्यां गायन्त्यस्तं विचारिरे कणोत्पलालकबिटङ्ककपोलघर्म वक्ताश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यै गोप्या समं भगवतानन्तो स्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परिस्वङ्गकराभिमर्श स्निग्धे क्षणोदाम विलासहासे रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी भेद्यता बक स्वप्रतिबिम्ब विभ्रम तदङ्ग संग प्रमुदा कुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्जा प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो विश्वस्तमालाभरणाः कुरुद्वा कृष्ण विक्रीडितं वीक्ष्य मुमुखे चरस्त्रियः तमार्दिताः शशाङ्कश्च सगुणो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तम् आत्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे च भगवान् तावेरात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि स प्रांजत्करुणा प्रेम्णा सन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्य स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलद्वि गण्डश्रिया सुतितहासनिरीक्षणेन मानं ददति ऋषभस्य जगो कृतानि पुण्यानि तत्कररुहा स्पर्श प्रमोदा ताभिर्युता श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग घृष्टस्रजा शकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कन्दर्वपालिभिरनुद्रुतया विसद्वा श्रान्तो गजीभिरिवराड्युविन्नसेतु सोम्बश्चलं युवतिभिः परिषच्यमाना प्रेम्णेक्षिता प्रहसतिभिस्ततोऽङ्ग वैमानिकैः कुसुमवर्षभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरति रत्नरजेन्द्रनीला ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रसूनगन्धा निरजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्ग प्रमदा गणावृतो यथा मदच्युद्वृतकरेणुभिः एवं शशाङ्कासु विराजिता निशाः ससत्यकामो नृता बलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरत सर्वा शरत्काव्यकथा रसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मश्च प्रशमायै तरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंसेन जगदीश्वरः सकथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम् आचरत् ब्रह्मन् प्रदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपते कृष्णवाहनवे जुगुप्सितं किमि विप्राय एतं न संशयं चिन्त्य सुब्रत श्रीशुकोवाच धर्मव्यतिक्रमोदिष्टायुषाणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा न तत्समाचरे जातो मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मोढ्याद् यथा रुद्धो बीजं विषम् ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरतं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमा तत्समाचरे कुशलाचरते नैषाम्य स्वार्थो न विद्यते विपर्येणावानर्थो निरङ्कारिणां प्रभु किमुताखिलसत्त्वानां त्यज्यं मर्त्यादिवौकसाम् ईष्टो चेस्तव्यानां कुशलाकुशलन्वयः यत्पादपङ्कजपरागणेशे व्यतिप्ता योग प्रभाविताखिल कर्म मंदा स्वैरं चरन्ति मुनियोऽपि न नय्यमानास्तस्येच्छया तव वपुषा कुतेव बन्धा गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षा क्रीडेनेने देवाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भवति तादृशी क्रीडाया सुत्वा तत्परो भवे नासूयन् खलु कृष्णाय मोहिता तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान्धारान् व्रजोकसः ब्रह्मरात्रावपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो यैर्गोप्या स्वगृहान् भगवत्प्रीत्याः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयात् तवर्णेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतलभ्य कामं हृद्रोगमास्वपैनोत्यचिरेण धीरा हृद्रोगमास्वपैनो
हृद्रोगमान् स्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावनं नाम त्रयस्त्रिंशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री हरि कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधे। घंटी तो दबा दीजिए मेरी, अगर वीडियो देखी है तो घंटी तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, कुछ लिख के तो भेज दीजिए, कोई तो संदेश दीजिए मुझे।